हाय, आई एम रयान फ्रॉम YThinkers। आज हम देखेंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमको एक एपी दिया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 3 5 एंड दे आर आस्किंग एडिशन ऑफ दिस और सम ऑफ दिस, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे कैलकुलेटर में 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे करते हुए जाएंगे। दिस इज नॉट द वे वी ह्यूमंस वर्क। वी कम अप विथ अ वेरी गुड सोल्यूशन सच दैट इतना सारा काम हमको ना करना पड़े। दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट द फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला के डेरिवेशन पे जाऊं तो टाइम लगेगा, और दूसरी बात जो क्वेश्चंस इस पे आते हैं इज मोस्टली हाउ यू यूज दिस फॉर्मूला, so we will focus on that more in this video. If I notice this formula, I can get one more formula from this, which is just basic common sense. क्या मैं इसको, I'll erase this example. Okay, can I write it as n by 2? 2a को अगर a plus a और बाकी का अगर मैं ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर लूं, तो I've got one more superb formula that is nothing but s is equal to n by 2 a. This is nothing but an or last term, so I'll write it as an and I've got one more formula just by thoda interchange karke. So I've got two formulas. Whenever you get a formula, you need to know what are the variables मतलब ऐसे चीज जिसका वैल्यू हर क्वेश्चन पे चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये फॉर्मूला देखें, इसका वैल्यू चेंज होगा। सम ऑफ टर्म्स माइट बी चेंजिंग। एक क्वेश्चन में 100 आएगा, दूसरे क्वेश्चन में 1000 आएगा, आई हैव नो आइडिया। n नंबर ऑफ टर्म्स अगेन दैट विल बी चेंजिंग। एक क्वेश्चन में 10 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, सेकंड क्वेश्चन में 20 होंगे। टू वैल्यू विल नॉट चेंज, दिस इज अ कांस्टेंट। a again value will change, first term of the AP can be different for different questions, and d. So you have to be clear with what is a variable and what is a constant. Once you know that, then every question में क्या करेंगे, मुश्किल से क्या करेंगे, ये पूछेंगे तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। If they ask what is n, we need to know all the other things and we can find out n. कभी कभी s दे देते हैं, n दे देते हैं, a दे देते हैं, d का वैल्यू पूछ लेते हैं, हमको बस सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा अलजेब्रा का खेल खेलना है, एंड वी हैव गॉट डी वैल्यू। सो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। दे आर आस्किंग मी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज, एपी को देखूंगा मैं और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी लिख लूंगा। a is equal to 8. okay, how to find out d? d is nothing but second term, a2 minus a1. a2 is 3 minus 8, which is minus 5. 3 minus 8 is minus 5. Okay, so d is minus 5. Okay, so they're asking me to find out the sum of terms. Let me take a different ink. I'll use the plain formula. I'll write s is equal to n by 2 a, I'm sorry, 2a plus n minus 1 d. This is the formula. I know, I've studied in the previous slide. क्या मुझे n पता है? हाँ, n is equal to 22, इधर ही दे दिया है। क्या मुझे a पता है? Yes. क्या मुझे d पता है? Yes. So if I know all the variables, I can easily find out the sum. If I don't know, I have to look into the question again and find it out. So let me substitute. Plain simple substitution का खेलेंगे। n के जगह 22 लिख दूंगा। Okay, 2a के जगह 2 into 8 16, 2 8 जा 16 plus n के जगह 22, 22 minus 1 21. Okay, n के जगह 22, 22 minus 1 21, d के जगह minus 5. Okay, so now this is nothing but plain division, so becomes 11. 16 को ऐसे ही रखूंगा। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट करूंगा बिकॉज वी नो बोर्ड मास रूल, राइट? बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लिकेशन, m स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, a फॉर एडिशन, s फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इधर हम लोग अगर देखेंगे, देयर आर टू थिंग्स, वन इज addition and multiplication. So first we'll solve multiplication. Okay,
So 21 into minus 5. 21 is a positive term, minus 5 is a negative term. So plus into minus is minus. So I'll open the bracket and write minus. Done. 21 5s are is nothing but 110. If you can separately calculate there, it will become 110. I know the calculation, so I'm just writing here directly 100 and I'm sorry 105. Okay, done. So 11 stays the same. ब्रैकेट के अंदर अगर आप ये देखोगे, so this is nothing but plus minus. तो plus into minus is minus. So can I write minus 16 मतलब sorry 105 को ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा. Okay, so 16 minus 105 is nothing but 89. आप लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, it will come as 89. So it will be 11 into, क्या मैं 89 लिख दूंगा? Is this the right step? It is minus 89. Because you're doing 16 minus 105. मतलब आंसर नेगेटिव में जाएगा तो minus 89. So 11 into minus 89 अगर आप करोगे तो I'll do it here. 89 into 11, 98, 98, 9, 17, 979. So answer will be, again this is a plus, plus into minus is minus, 11 into 89 is 979. So sum of 22 terms is nothing but 979. Simple execution play. The only place you can go wrong is if you don't know the algebra. अगर आप इसको प्लस इंटू माइनस अगर प्लस ही लिख दिया, या फिर 16 माइनस 105 को आपने गलत लिख दिया, तो उसमें भी आपका मार्क्स चला जाएगा. एंड इवन हियर, इवन एट द एंड पीपल डू दिस मिस्टेक्स. यू नो एग्जाम में जल्दी जल्दी में क्या करते हैं लोग, सो 11 into 89 डायरेक्ट कैलकुलेशन करके 979, they forget this minus sign, you lose the marks. Okay, everything if you do correct, but if you don't put the sign at the last, you lose marks. तो ये हो गया. हम लोग नेक्स्ट एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं. 5.3 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड सब पार्ट. आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स फॉर, हम लोग इजी जाएंगे थोड़ा, उसके बाद थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट के लिए मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो प्लेन है, दे आर आस्किंग मी द सम, राइट. सो इफ दे आर आस्किंग मी द सम ऑफ द होल टर्म, सिंपल है. गौर से अगर आप देखोगे तो a मिल गया मुझे विच इज -5. डन. d फाइंड आउट करेंगे. d सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? d a2 विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. इधर अलजेब्रा यूज होगा, आपका प्लस माइनस वो गेम अच्छा होना चाहिए. लेट्स सी, a2 क्या है? -8 है सेकेंड टर्म. ओके, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -5. और से देखिए आप, तो दैट इज -8 माइनस -5. Okay, can I write -8 like this? No problem. Minus into minus is plus 5. Done. -8 plus 5 is nothing but 5 minus 8. वही होगा ना, -8 plus 5 same as 5 minus 8. 5 minus 8 तो नेगेटिव में गया आंसर, तो क्या हो गया? -3. सो d जो है वो -3 हो गया. ये अगर आपको माइनस इंटू माइनस प्लस, अगर दिस एंड ऑल बेसिक्स इफ यू डोंट नो, you will falter in the exams, right? So what I'll do is I'll erase the working of this and I'll directly write d is equal to -3. अच्छा, d is equal to -3. अच्छा, there's one more thing we know. We know the last term, that is nothing but we know an is equal to -230. अच्छा, remember I explained you the formula. I told in the formula, या तो n दे, या तो n पूछेंगे, या तो फर्स्ट टर्म पूछेंगे, या तो s पूछेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, s पूछा है, n दे दिया है, an दे दिया है, a दे दिया है. n जो है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, इट हैज नॉट बीन गिवन डायरेक्टली. दैट इज अ ट्रिक. इट हैज बीन गिवन इनडायरेक्टली. लेट्स सॉल्व, लेट्स सी. दिस इज अ क्वेश्चन. यस, if I have to apply the formula, s is equal to n by 2 a plus an. a मुझे पता है, डन. a पता है मुझे, डन. n नहीं पता है. For that what we'll do, we will go back to the first concept.
जैसे हाउ आई एम थिंकिंग, मुझे क्या नहीं पता है उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ. आई नो दैट आई वांट टू नो n. सो व्हाट आई डू, आई विल यूज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था. क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ए एन इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस वन डी. अच्छा, ए एन क्या है? -230. ए क्या है? -5. एन माइनस वन क्या है? n I don't know. I'm finding out that d is -3. Okay, so this minus will go that side. When this -5 goes that side, it will become +5. So can I write n minus 1 -3? Yes, -230 plus 5. Okay, it becomes -225 divided by -3. Why? Because -3 was in multiplication here. When it went to the other side, it became division. Minus minus cancel. Plus नहीं है ये, cancel हो रहा है वो. I'll use a different thing to get to know the this thing. Minus minus cancel. 3 ones are, 3 sevens are 21, 3 fives are 15. So n minus 1 is equal to 75, n is equal to 76. Now I can use this formula because I know A, I know AN, I didn't know N, but I found out N. That's all. Whichever you don't know, you have to link how to get it. You didn't know N, so I came up with the first concept, I got N. Let me put it plain substitution. 76 divided by 2. A is nothing but -5 and AN is nothing but -230. Okay, this is nothing but 2 3s are 6, 2 8s are 16, 38. Okay, -5 plus into minus -230. Okay, you will get the -235. Okay, if you multiply this, you will get the answer. I don't want to do the multiplication because it will take much time. You can do it by yourself. Remember one thing, you will multiply, you will get the correct answer. You have to know the sign. 38 is positive, this is negative, so plus into minus is minus, so the final answer will be minus something something. That you have to find out by yourself. You can do multiplication, you can get it. Okay, understand the logic behind it. एक ही फॉर्मूला को वो किस तरीके से पूछ सकता है, उसको क्या मिसिंग है, जो भी मिसिंग है उसको कैसे हम लोग इनडायरेक्टली इट वुड हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. अगर वो लास्ट टर्म देता ही नहीं, आई कुडंट हैव फाउंड आउट n. That is the reason it gave last term. Okay, you have to understand. You get it with practice, but you have to know the logic while solving the question. Come to the next question. Plain and simple. Even in the first concept video, I've told you. Whenever you get this question, this is a very easy question. इसमें बस फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता है, हाउ टू कन्वर्ट द इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में. हम लोग ट्राई करेंगे, उतना क्या भी डिफिकल्ट नहीं है. I'll take this color. Okay, no problem. The first and the last term are 17 and 350. So I've got my first term. A is equal to 17. A n is equal to 350. जो A n है ना, इसको हम लोग L भी बोल सकते हैं. L मतलब last term. In some states, they use L. In some states, they use AN. And even, we write A5 or A6 or something like that. In some state or schools, they teach it as T5. Fifth term. It is not a big concern, but just letting you know. तो हो गया. तो first term is 17, this term is 15. If the common difference, wow, difference भी दे दिया है 9. अच्छा, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there? n नहीं पता और sum नहीं पता. अच्छा, मैं क्या करूंगा, ये लिटरली सिमिलर क्वेश्चन थे प्रीवियस एग्जांपल के. आई टुक दिस अप टू शो यू दैट हाउ ओनली इंग्लिश लाने से बंदे घबरा जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ऐसे मैं बस n सॉल्व करूंगा, s आपको सॉल्व करना है. आई विल ओनली सॉल्व n को सब्स्टिट्यूट करो s में मिल जाएगा, बट आई विल ओनली सॉल्व n. आई विल ट्राइंग टू टीच यू द ट्रिक. मुझे n पूछा है ना, मुझे an का पता है फॉर्मूला फ्रॉम द फर्स्ट concept. an is nothing but a plus n minus 1 d is equal to 350. Simple. a पता है मुझे 17 plus n minus 1, n नहीं पता, d क्या है 9, 350. कितने बार क्या हम लोगों ने, अगर ये पॉजिटिव है उधर गया तो नेगेटिव हो जाएगा.
So it will be 350 minus 17 n minus 1 9, करेक्ट. 350 minus 17 कितना हो गया? 334 या 333 7 10, हाँ 333 n minus 1 n. अगेन वी हैव डन दिस मल्टीपल टाइम्स. डिवीजन में है तो सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर साइड गया तो डिवीजन में. सो आई विल राइट इट डायरेक्टली हियर. 9 क्या हो गया? डिवीजन में चला गया. सिंपल. 9 1 जा 3 3 जा 111 3 3 9 2 3 7. So you can do this division. I know the calculations, so I'm doing it here. You can go to the working column, do the division, and you'll get back the same answer. So n minus 1 is equal to 37. n is equal to minus 1 उधर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 37 plus 1 38. I know n, I've got n. तो मुझे सम के फॉर्मूला में what was the sum formula? s is equal to n by 2 a plus an. n पता है, a पता है, an पता है. I know all the variables. I just have to put the values और उसको बस सही algebra, सही calculation करना है, and I've got the answer. हर टाइम आपको फॉर्मूला में देखना है कि क्या मिसिंग है, उसको फर्स्ट फाइंड आउट करो, फिर फॉर्मूला में जाओ. ओके, सिंपल. ऐसा आपको फाइंड आउट करना. आई एम नॉट फाइंडिंग, it's plain and simple. Okay, this is a very logical question. This is a bit upper, like a bit like higher concept level. इसमें फर्स्ट आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया है. It's mostly indirect. So what they are asking is, this asking sum. They are asking literally sum of first 40 positive integers. So can I write n is equal to 40? 40 positive integers पूछा है. Yes. Which are divisible by 6. That's all they have said. They have not told me what is the first term. They have not told me what is the last term. They have not even told me common difference. They have just told find 40 positive integers divisible by 6. It's very difficult for me to find out a, d if I don't know 6 table. We have studied 6 table from class 4. क्लास 5 से हम लोगों ने 6 टेबल पढ़ा है. जो भी 6 टेबल पे है, 6 1 6 6 2 12, they are divisible by 6. Correct? Is 12 not divisible by 6? 12 divided by 6 is 2. Is 18 not divisible by 6? Yes, it is. Is 15 divisible by 6? No, वो डेसिमल में चला जाएगा. डिविजन मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए. 15 जो है, it is not divisible by 6, क्योंकि आंसर ऐसे कुछ आएगा 2 point something something आएगा, तो वो नहीं है. क्या 18 डिविजिबल है 6 से? हाँ, डायरेक्ट 6 3 जा 18 डायरेक्ट आ जाएगा. तो डिविजिबल दिया है, तो हेंस सिंपल है. द फर्स्ट टर्म व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 इज 6. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 6? 12 एंड 18. 6 3 जा 18 गोज ऑन. क्या मुझे a मिल गया? a इज इक्वल टू 6. कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6. Just by giving that hint, I'm able to calculate that. So now let's see. Sum का formula सबको पता है. S is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. Ryan, why didn't you use a plus an formula? Because last term they have not given me. If they have not given me an, why should I use that formula? We had studied 2 formulas, right? ये formula तब use करूंगा जब मुझे an दिया है. They have not given me in this question. I can use this formula. So that is why I'm using that formula. Correct? So therefore, let's check. Let's check with the formula. Do I know n? Yes. Do I know a? Yes. Do I know n again? Yes. Do I know d? Yes. Khatam. Plain substitution, answer. Okay, I'll not waste time. 40 divided by 2. 40 divided by 2. 2 into a. 2 6 are 12. Direct लिख रहा हूं मैं. 2 into a. 2 6 are 12. Plus 40 minus 1 39 into d 6. Okay. I need a little bit of space. So sorry. So 20. 40 divided by 20.
अब ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, कैन आई डू 12 प्लस 39? नो, वाई? बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, m मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट आएगा एडिशन से पहले, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, 6 into 39, I'll do it here, 6 into 39, 6 9s are 54, 6 3s are 18, 18 plus 5 is 23, तो 234 आएगा, so 12 plus 234, okay, now 20 into 12 plus 34, 234 is nothing but 246, ये कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. इफ यू वांट आई विल डू इट. 2 6 are 12, 2 4 are 8 9, 2 2 are 4, 4920, okay, is the answer. This is the least step answer we have done from compared to all. और आपको लगा था सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, सीधा दिया था, प्लेन सब्स्टिट्यूशन है, इस दिस नॉट इवन ए एन फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं. अच्छा, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी सिंपल, आई विल नॉट एट ऑल वेस्ट टाइम, डायरेक्ट जो इंग्लिश में था उसको मैथ्स में कन्वर्ट करूंगा. फाइंड द सम, सो सम फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम. ऑड नंबर्स, as soon as you hear the odd number you should be like 1 3 5 7, दिमाग में रेडी होना चाहिए, between 0 to 50. अच्छा, what is the first term of the AP? Odd numbers है. Can I write 0? Is 0 an odd number? No, it is not an odd number. What is the first term of this AP? 1. What is the next term? 3. अच्छा, then 5, then goes on. What do you think is the last term? Can I write 50? No, 50 is an even number. 50 is an even number. It is telling odd number. So therefore, can I write 51? सर ये तो ऑड नंबर है, बट इट इज अबाउ 50, मतलब 50 के आगे है, वो नहीं ले सकते, तो 49. आई हैव गॉट ए, आई हैव गॉट डी. डी कैसे, ए क्या हो गया, ए 1 हो गया, डी जो है 2 हो गया, बिकॉज 3 minus 1 2, second term minus first term 2. What is the last term I have got? A n is equal to 49. Now you guys tell me which formula to be used. You have to use the second formula. For using the second formula, same like how we have done in the previous sums, first मुझे n find out करना है. How many number of terms are there? 1 से लेके 49 तक कितने number of terms हैं? I have no idea. Let me find out. I know a n, right? Can I write a n as a plus n minus 1 d is equal to 49? Done. a के जगह 1 रखूंगा, n minus 1 के जगह n minus 1, d के जगह 2 is equal to 49. सेम थिंग इज रिपीटिंग. 1 इधर है पॉजिटिव, उधर जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी n minus 1 to 49 minus 1 is 48. अच्छा, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन हो जाएगा, तो इट विल बी 48 by 2 which is nothing but 24. n is equal to, माइनस 1 उधर चले जाएगा तो 20 प्लस 1 हो जाएगा, so n is equal to 25. So I have got n is equal to 25. Okay, I will push it to the other side. That's all. That's all you had to do in this sum. Then you know the sum formula, n by 2, a plus an. Do you know n? Yes, we know n. Do you know a? Yes. Do you know an? Yes. Plain execution. Can I write n is 25 by 2? a के जगह मैं 1 लिख लूंगा, लास्ट टर्म क्या है 49. ओके, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 25 by 2. दिस इज नथिंग बट इनटू, अगर ब्रैकेट होगा तो इनटू होगा, इनटू 1 plus 49 is 50. Sorry, that's all. So 2 1s are 2 25s are. अच्छा, so it will be 25 into 25, which you can multiply again in the working column, but I know the answer, so I'll write 625. Okay, this was the sum of odd numbers from 0 to 50. Just go through this. We have first found out what is n using an. अगर हमको an नहीं दिया गया होता, we couldn't have found out n, hence we couldn't have solved this question. So we have to see that also. Whenever a question is given, you have to see what is missing first. क्या missing है, उसको कैसे मैं लेके आऊं, that's all. फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करना है, हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करके लेके आएंगे. Now let's come to the last question. Actually this is sum of rupees. Okay, sorry for using a tag. If each price is rupees
20 lesser than preceding price, find the value of each price. Okay, sorry. Okay, simple English format, convert to mathematical form first. What do? A sum of 700, sum दे दिया direct, sum is 700, sorry, sum is rupees 700, 700 लिखूंगा, is to be used to give 7 cash prizes to a students of school for overall 7 cash prizes, मतलब n is equal to 7. If each price is 20 less than its preceding price, d, they have given me the d is minus 20. First price, next price, if you go, you have to minus 20 from the first price they've given. That is why they're less. Less ka matlab less than, so minus 7. If it was more than, I would put plus 20. Simple. So find the value of each price. They're asking me first price kitna hai. They're basically asking me a1 kitna hai, a2 kitna hai, etc. Okay, I'll only find a, उसके बाद आप d add करते जाओगे तो you will get the next term. Simple. We know the sum formula, which is nothing but n by 2. Hold on. Can I write n by 2 a plus 2a plus n minus 1 d is equal to 700? I've used this formula. Why? Because an मुझे नहीं चाहिए. I don't have an, so let me not use an. So do I know n? Yes. Do I know a? No, I don't know a. That is what I have to find out. D, do I know? Yes. So I can easily solve this equation. 7 divided by 2. 2 into a, I don't know. N के जगह 7, 7 minus 1, 6 into d के जगह minus 20. Okay, is equal to 700. Okay, so same thing again. So what I'll first solve the bracket. 2a ऐसे रहेगा. First multiplication is plus into minus is minus. 6 into 20 is 120. Okay, 700. Now what I'll do? So I'll bring this 7 to that side. When I transfer a multiplication constant towards that side, it becomes division. Same thing with 2. 2 is in division here. When I transfer to that side, it will be multiplied. So can I write it like this? 2a minus plus into minus 700 into 2. क्यों? ये नीचे ये डिवीजन में था तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये डिवीजन में आ जाएगा. Done. 7 ones are 100s. So this becomes 200. 100 to 200. So this is 2a minus 120. Okay. So my minus term goes that side. So it will become 2a is equal to 200 plus 120. So can I write it as 320? And a is equal to 320 divided by 2, which is 160. The first price is of rupees 160. What would be the next price? What would be the next price? If first price is this, how to find out the second price? A2 is equal to a plus d, right? हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, a फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म a plus d है, थर्ड टर्म a plus 2d है, correct? So second price is a plus d. What is a? 160. D is minus 120. Sorry, minus 20. So second price is 140. So therefore, if you were receiving the first prize, you would get 160 rupees. If your brother would be receiving the second prize, you would get 140. What would your another brother or another friend, you would be receiving 140 minus 20, 120. So therefore, AP इधर ही बन गया 160, 140, 120, 100 and goes on till 7 prizes. 7 है ना? हाँ, 7 prizes. So that's all. Convert the English to proper mathematical format. Solve the equation. हम लोग इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर आए. Okay, I wanted to show all the steps, so I've taken this much space. I want, because these are the mistakes you make. You forget plus into minus is minus, or you don't know the proper division, you don't know the cross multiplication. So I've done all the steps. I even found out a2 for you.
second term, and third term, and so on. This was the question. So if you want to learn more such concepts on arithmetic progression or on other mathematics videos, subscribe to YThinkers.